एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अपनी माहिरी। आज हम 51 से लेकर 100 बिट्स तक पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन के एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए हम 51th क्वेश्चन देखेंगे। द सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन इम्प्ली दैट द स्टेट हैज़ टू गिव बट नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल। ऑप्शन 4 आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 52nd वन, rigid system of state education is justified on the basis that the state, option 3 आंसर है, has a right and a bonded duty to move the citizens to a pattern which makes for its own preservation and enhancement. Okay, option 3 आंसर है। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन 1 आंसर है। देन नेक्स्ट वन 54th वन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21A। ऑप्शन 2 आंसर है। नेक्स्ट वन, the name given to women who gain highest education in Vedic period was, क्या बोलते थे? ब्रह्मा वदिनी बोलते थे। ऑप्शन 4। नेक्स्ट 56th वन, in 1964 when Dr. D.S. Kothari was appointed as the chairman of the Indian Education Commission, he was holding the position of, क्या था? ऑप्शन 3 आंसर है, चेयरमैन ऑफ द UGC। ओके, देन नेक्स्ट 57th क्वेश्चन, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर एजुकेटर्स IATE, द ओल्डेस्ट एंड लीडिंग प्रोफेशनल बॉडी ऑफ टीचर एजुकेटर्स ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, ऑप्शन 3 आंसर है, 25 नवंबर 1950। ओके, next 58th question, what is the function of PSSCIVE भोपाल? ऑप्शन 4 आंसर है, ऑर्गेनाइजिंग रिसर्च डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशंस एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क। ओके, नेक्स्ट 59th one, as per the article of Indian Constitution, reservations are provided to SCs, STs in jobs appointment in government sector. Article 16(4). Option 1 answer है। Okay, next, according to RTE Act 2009, what is the percentage of children belongs to disadvantaged groups and weaker section to which private unaided institutions shall provide free and compulsory education? 25%। ऑप्शन 4 आंसर है। यहाँ तक 60 बिट्स कंप्लीट है। नेक्स्ट 61th वन, which of the following made right to information regulation of fees and cost rules 2005? ऑप्शन 1 आंसर है, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट। ओके, ऑप्शन 1 आंसर है। नेक्स्ट वन, all the children have the right to get service from any healthy organization. This is a right to survival. Option 1 answer. Okay, next, as per NCF 2005, the administrations from which of these combination of subjects are closed at the +2 stage into CBSE? Option 3 आंसर है, biology, literature and history. Right? Next, the name given to those students who remember the hymns by hearing only once. Option 1 आंसर है, शुद्धोद्धार। Okay, next, the Hunter Commission 1882 made valuable recommendation for the development of, option 2 आंसर है, primary education. Yes. Next, the chapter of the NCERT documents contain code of professional ethics for teachers suggest a mechanism for its observance by teachers. मतलब ऑप्शन
3. Chapter 2. Okay. The chapter of the NCERT documents contains Code of Professional Ethics for Teachers, suggests a mechanism for its observance by teachers. Option 3, chapter number 2. Okay. Next, important qualities interventions provided under the RMSA schemes includes. Answer है option 1, appointment of additional teachers to reduce public teacher ratio 30:1. Okay. Next, according to Right to Information Act 2005, appellate authority is appointed by option 1, public authority. Next one, they describe the three methods of pronunciation as free words, double words, gradual pronunciation. ऑप्शन 3 आंसर है ऐतिरिया ब्रह्मणा. ओके. नेक्स्ट वन, द इंडियन एजुकेशन कमीशन इन 1882 was appointed by Lord Ripon. ऑप्शन 4. नेक्स्ट वन, this chapter of the NCERT documents containing Code of Professional Ethics for Teachers gives the detailed account of the Code of Professional Ethics. Chapter 1, option number 4. Okay. Next one, this is an objectives of Sakshar Bharat mission. Option 2 आंसर है impart functional literacy and numeracy to non-literate and non-numerate adults. Option 2. Next one, the chairman of National Commission for Protection of Child Rights in 1992. Option 1 आंसर है शांति सिन्हा, डॉक्टर शांति सिन्हा. Option 1. Next, POCSO Act 2012 is about. Option number 3, protection of children from sexual offences. Okay. According to NCF 2005, this takes away the joy of being young and dealing to school knowledge from everyday experience. Option 2 आंसर है learning for the sake of being examined in a mechanical manner. एक बार फिर से देखो. According to NCF 2005, this takes away the joy of being young and dealing to school knowledge from everyday experience. So option 2 आंसर है learning for the sake of being examined in a mechanical manner. Next, according to Right to Free and Compulsory Education Act 2009, the meaning of the term free education is. Option 3 means no child shall be able to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education. Okay. No child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education. Option 3 answer. Okay. Next, as per NCF 2005, science can play a truly liberating role, helping people escape from the vicious cycle of. Option 3 answer है ignorance and superstition. Okay. Next, one of the following is not a characteristic features of a gifted child. Inertia. Option 2 answer. Okay. Next, which of the following is called the book of Precis Athara Veda? Option 3. Next, which of these is also known as report by the Central Advisory Board of Education? Option 2, Sargent Committee report. Okay. Which of these is essential for ensuring a learning environment that addressing children's diverse needs? Option 1, teachers' autonomy. Next, one of the following state is under purview of RIE Ajmer for teachers' education and other education requirements. Jammu and Kashmir. Option 4. Okay. As per RTA Act 2009, this should be the distance from the
डिस्टेंस नॉर्म फॉर 6th to 8th स्टूडेंट्स टू असेस स्कूल एजुकेशन नियर बाय देयर हैबिटेशन. कितने किलोमीटर्स? 3 किलोमीटर्स. सो ऑप्शन 3 आंसर. नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो ऑप्शन 3. नेक्स्ट है, द system that was based on family tradition and related to ancient shees is option 4 Gotra. Next, which of these is also known as report by the Central Advisory Board of Education? Sargent Committee report, option 2. Next, practical education for discipline is Upanishad period includes option 3 Bhikshatana, Yajnagni, thumbing the animals of the ashrams and cultivation. Okay. How many parts are including in the NCERT documents containing a code of professional ethics for teachers? Option 3 आंसर है 1. Following NPE 1986, the number of SCERTs established for providing in-service education to primary and secondary schools teachers. Option 130 answer. Okay. Next, number of districts identifying to cover under Sakshar Bharat. Option 1 answer है 410 districts belongs to 27 states including UTS. Okay. The replaced the 60 years old UN Commissions on Human Rights as the key UN intergovernmental body responsible for human rights. Answer है option 2 the Human Rights Council. Okay. Next, 10th December is observed as 10th December को क्या मनाए जाते हैं? ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं. ऑप्शन 2. नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 दिस शुड बी द मीडियम ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स इन स्कूल्स. होम लैंग्वेज. ऑप्शन 4. नेक्स्ट, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स डज नॉट डेवलप दीज स्किल्स. ऑप्शन 4 लिटरेरी स्किल्स. सो मैथमेटिक्स में डेवलप होते सो स्किल्स कौन से हैं बोलते? क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, करेक्शंस ऑफ प्रोडक्टिव स्किल्स रहते. लेकिन अदब वो लिटरेरी स्किल्स नहीं रहते मैथमेटिक्स पढ़ने से. द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ ब्राह्मण्स एंड वेदास इज. तो कौन सा है करेक्टली मैच? मतलब कौन सा? फर्स्ट वन अथेरिया वेदा ऋग्वेद. ऑप्शन 1. नेक्स्ट है, women of Upanishad period were trained is. Option 2 fine art. Answer fine art. Next, a code of professional ethics for teachers was declared by NCERT in this year. Option 2 1997. Following NPE 1986, efforts have been made to develop these institutions for providing in-service education to secondary school education. So secondary school teachers. Option 1 IASEs. Okay. Next one, expand DPEP. DPEP का expand कीजिए. मतलब डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट नहीं है. डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम. कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं प्राइमरी पे और प्रोग्राम पे. डिस्ट्रिक्ट पब्लिक समझते रहते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के पास बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता. प्रोग्राम और प्रोजेक्ट बोल के, लेकिन प्रोग्राम है. ओके. DPEP का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम. ऑप्शन 1. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस डिस्कसेस द नेचर एंड रिलीम्स ऑफ वैल्यू. ऑप्शन 3 आंसर है एक्सियोलॉजी. ऑप्शन 3. ओके. नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, द आर्टिकल ऑफ Indian Constitution relates to rights of minorities to establish and administer educational institution based on language religion institutions. Article 30. Option 2. Okay, फिर से एक बार देखो. The article of Indian Constitution relates to rights of minorities to establish and administration educational institutions based on लैंग्वेज रिलेशंस इंस्टीट्यूशंस. आर्टिकल 30 ऑप्शन 2 आंसर है. यहाँ तक 100 बिट्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी. 1 to 50 एक वीडियो में हो चुके हैं. अब ये है 51 to 100
इन दूसरे वीडियो में है। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।